Hello, my dear grade 9 students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing surface area and volumes in a one shot session. So, today we are going to do the theory, all the formulae, plus the questions as well. You're going to do some important questions from your NCRT point of view, as well as we're going to do the theory part. So, this chapter is important because even in your 10th standard, you're going to have the same chapter with some more new concepts. So yes, surface area and volume. Let's start today. Easy session है. The majorly you have to just learn the formulas. Formula याद हो जाएंगे तो the full chapter is done. Okay. So one short session है. So let's start. Before starting, make sure आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, so that we can begin with our today's session. So let us start with the basic things. Okay, what is a plane figure? प्लेन फिगर आर नथिंग बट वो सिंपल फिगर्स होते हैं जो हम एक पीस ऑफ पेपर या कोई भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जांपल स्क्वायर. करेक्ट. सर्कल. रेक्टेंगल. ट्रायंगल. ऑल ऑफ द शेप्स क्या है? ये प्लेन फिगर्स है. I can draw it on the piece of paper or any plane, correct? But solid figures are 3D shapes. What is 3D? 3D means three dimensional. Correct? Three dimensional means तीन dimensions होते हैं. Height, length, and width. They occupy some space and called as solid figures. It includes cube, cuboid, and everything. जैसे हम cube को we can roughly draw it on a paper also, but exactly if you want to see a cube, a sphere, you have to take a ball, a cylinder, or take suppose a dice. All of these are examples of solid shapes. But plane figures वो figures होते हैं जो हम एक सादे से पेपर पे भी ड्रॉ कर ले. ओके. नाउ प्लेन फिगर्स के पास टू थिंग्स होता है. एरिया एंड पेरीमीटर. करेक्ट. आपने सबने पढ़ा होगा एरिया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इट, सॉलिड फिगर्स के पास ये नहीं होता. सॉलिड फिगर्स हैव थ्री थिंग्स. व्हाट आर दे? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एंड लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सॉलिड फिगर्स के पास ये थ्री पैरामीटर्स होते हैं. वॉल्यूम means the space occupied by any solid shape or the capacity and volume of that figure. Unit is cubic units. For example, centimeter cube, meter cube, all of these are units of volume. So जितनी space occupy कर रहा है, या how much capacity is of the solid, that is known as the volume. For example, आप water bottle लेते हो, correct? It may be written 1 liter की bottle है. What is that 1 liter? That is the volume of the bottle. Okay. Next is surface area. The area of all the faces of solid shape is the total surface area of that figure. Unit is in square units. Surface area, lateral surface area are always in square units. Centimeter square, meter square, any square, because it is area. Alright. So जब सारे फेसेस का कर्व फेस हो या प्लेन फेस हो, उन सारे फेसेस का एरिया मिला के इट बिकम्स द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप. ओके. इट इज ऑल्सो नोन एज TSA. थ्रू आउट अभी चैप्टर के हम लोग टोटल सरफेस एरिया ये नहीं लिखेंगे, हम बस लिखेंगे TSA. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज सॉरी टोटल सरफेस एरिया. लास्ट है लैटरल और कर्व सरफेस एरिया. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LSA और CSA. बोथ आर द सेम थिंग्स. नाउ डिफरेंस क्या है? नाउ इसमें भी हम सरफेस एरिया ढूंढ रहे हैं, बट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप आफ्टर लीविंग द टॉप एंड बॉटम or any curved surface is known as the lateral or curved surface area. मतलब शेप का टॉप एंड बॉटम हम निकाल देंगे. टॉप एंड बॉटम निकाल देंगे एंड देन व्हाट फिगर वी गेट, उसका एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया. तो इस चैप्टर में हमारे पास थोड़े से शेप्स है. क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर.
ये हमारे पास सॉलिड शेप्स एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। पहला शेप है क्यूब। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब? वी नो दैट क्यूब हैव सिक्स फेसेस, करेक्ट? क्यूब हैव सिक्स फेसेस, करेक्ट? नाउ all of them are equal because सारे faces square होते हैं, करेक्ट? all of them are square, सारे faces square होते हैं। if this is L, this length will also be L, this length will also be L, or this length will also be L. Okay, so cube is a shape which has six square faces, correct? Six square faces होते हैं। अब उसका टेबल देखो। LSA, चलो लेट्स स्टार्ट विद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। कितने फेस होते हैं क्यूब के? सिक्स फेसेस। स्क्वायर, स्क्वायर का दिस इज माय स्क्वायर L एंड L, ठीक है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? L स्क्वायर, करेक्ट? कितने फेसेस है? सिक्स है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? सिक्स L स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। अब lateral surface, lateral surface area will be what? lateral surface is nothing but जब आपके पास टू फेसेस हम निकाल देंगे, वन और ये बॉटम वाला निकालेंगे तो कितने बचे? फोर फेसेस। सो फोर एल स्क्वायर इज दी एल एस ए, करेक्ट? नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्यूब की होगी, एल क्यूब, ठीक है? एल क्यूब। एंड द डायगनल, डायगनल क्या होता है? लेट अस ड्रॉ वन रफ डायग्राम। और चलो इसमें देखते हैं, दिस डायगनल विच विल कट लाइक दिस टिल हियर, दैट डायगनल, उसका फॉर्मूला होता है √3l। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है? अब नेक्स्ट फेस आता है क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। नाउ क्यूबॉइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टीएसए, एलएसए एंड वॉल्यूम। ओके, नाउ अब क्या होगा? फर्स्ट लेट्स फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल अभी कितने हैं हमारे? सिक्स रेक्टेंगल्स है, करेक्ट? रेक्टेंगल का व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब इन अ क्यूबॉइड वी हैव थ्री डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक ट्रायंगल का क्या होगा? लेंथ इनटू हाइट, वन विल बी लेंथ इनटू हाइट, करेक्ट? दूसरा क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट? उसके बाद लेंथ इनटू हाइट वापस होगा, देन वी विल अगेन हैव लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट एंड ब्रेड्थ इनटू हाइट, करेक्ट? सो इन टोटल हमारे पास ये सारी वैल्यूज टू टाइम्स आएंगी। वी विल गेट टू टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, multiplied by two times of length into height and two times of breadth into height, ठीक है? ये मिलेगा हमको क्यूबॉइड में। अगर हम टू को कॉमन लेते हैं, taking two in common, what will we get? Taking two in common, we will get the value as 2 times LB plus BH plus HL. That is the total surface area of a cuboid. Okay, that is the total surface area. अब what is the lateral surface area then? Lateral surface मतलब only of फोर फेसेस, तो ये ऊपर और नीचे का कैंसल हो गया। सो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम nothing but 2 times of 2 times of h, 2h l plus b, that becomes your LSA of a cuboid. Okay, sorry, this is a mistake, it's cuboid. Okay, now उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट? एज आई सेड, वॉल्यूम होता है नथिंग बट हाउ मच कैन यू फिट इन इट, करेक्ट? हाउ मच यू कैन फिट इन इट, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज नथिंग बट एल बी एच। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच। अब डायगनल, व्हाट इज अ डायगनल? डायगनल अगेन ऐसा, दिस इज द डायगनल, ठीक है? इनसाइड होता है वो। द वैल्यू ऑफ डायगनल इज होल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें आपको कुछ डेरिवेशन आपको नहीं है एग्जाम में, सो द वर्क यू हैव टू डू इज बस आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है? सो क्यू लेट अस रिवाइज। क्यूब का एल एस ए इज 4l स्क्वायर, टी एस ए इज 6l स्क्वायर, वॉल्यूम इज एल क्यूब, डायगोनल इज √3l।
क्यूबॉइड का LSA is 2H into L plus B. TSA is 2 times LB plus BH plus LH. Then volume of a cube is LBH, or diagonal is whole root of L square plus B square plus H square. Now moving towards a cylinder. हाउ इज अ सिलेंडर फॉर्म? इमेजिन करो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल. इफ यू फोल्ड इट, एक साइड से अगर आप फोल्ड करते हो तो यू विल गेट वन हाइट, आई मीन यू विल गेट वन सिलेंडर. ये हाइट रिमेन्स द सेम, और एक कर्व्ड पार्ट इज द एल. सो एल इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस. Circumference of the circle formula is 2 pi r. So what will be my TSA? TSA refers to ये पूरा plus the length as well, isn't it? So what will be my TSA? TSA first to 2 pi r होगा, correct? That is my length. Multiplied by the radius of the circle, plus the height. That will give me the cylinder. ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया. lateral surface क्या होगा? lateral surface means the area of the rectangle. ठीक है, area of the rectangle length into breadth, correct? और साथ में the breadth also, correct? तो breadth क्या है इसमें? height है. so LSA becomes 2 pi r h. Okay, and volume of the cylinder we will study ahead. Now look over here. If the curved surface is covered by two parallel circular bases, then it forms a right circular cylinder. अगर आपके दो रेडियस भी आ गए, then it is fully closed. फिर आप इन दोनों को निकालोगे और then you can find the LSA as well, right? So here you see curved surface is 2 pi RH, total surface is 2 pi r plus h, as I said you, और volume of the cylinder is pi r square. ठीक है, volume of the cylinder is pi r square. ठीक है, clear? Now let us move towards our next shape, that is a cone. अब if we revolve a right angled triangle, एक right angled triangle है, okay, if I revolve that about one of its side, एक साइड से हम उसको revolve कर ले till the other one, so we will get a solid shape known as right circular cone. हमको क्या मिलेगा? We will obtain a right circular cone. ठीक है, कोन के पास वन सर्कल होता है, करेक्ट, एंड देन इट इज अ रेक्टेंगल अबव. ठीक है, so what will be my curved surface area? Look over here. Surface area of the right circular cone. Let us say the lateral curved surface area will be pi rl. Why? Pi rl will be because L क्या है? Now in our cone, let us say this ऐसा होता है cone, correct? This is the shape of your cone, correct? ठीक है, कोन में यू हैव दिस स्लैंटिंग थिंग, राइट? स्लैंटिंग उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. सो lateral surface area is denoted by pi r l. pi r l, pi and the radius, ठीक है, pi r और l the slant height. ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मतलब हम सर्कल को भी इंक्लूड करेंगे, करेक्ट? दैट इज पाई आर एल, करेक्ट, प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस आर. ओके, वाई? बिकॉज पाई आर एल तो एल एस है एक कोन का. देन वी इवन नीड फॉर दिस pi r square, which is the area of the circle. So that is your total surface area, correct? And how will I find out L square? L square, as you know, is the hypotenuse. So by Pythagoras theorem, L square is equals to h square plus r square. Slant height is equals to the height square plus radius square. ठीक है, clear? Because it's a right angled triangle. अब volume. Now, basically, if you take a cone, put it in a cylinder, cylinder की volume is pi r square h. ठीक है, तो उसको डालोगे तो वो 1/3 एरिया करेगा, because this is also right angle. Then
A cylinder is made up of a rectangle, again has a right angle, ठीक है. The volume of cone is nothing but cylinder का one third. So 1 by 3 pi r square h becomes the volume of the cone. ठीक है, clear? All right. Now let's move towards the second last shape, that is sphere. Sphere क्या होता है? Sphere you may seen, you know, the balls and everything are nothing but sphere. It is a three-dimensional figure made up of all points in this space. पॉइंट से बना होता है. इट हैज अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस. हर एक पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, नोन एज द रेडियस. एंड एक फिक्स सेंटर होता है, नोन एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ स्फीयर इज, नथिंग टू एक्सप्लेन. और व्हाट इज अ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर मींस जब एक स्फीयर को हम आधा कर देते हैं, हाफ कट. ठीक है, दैट इज नोन एज अ हेमिस्फीयर. जब एक पूरा स्फीयर हाफ में आ जाता है, दैट इज अ हेमिस्फीयर. Now, surface area volume find करते हैं. Surface area, what is the surface area? Now, if I take four, if I take four circles, okay, if I take four circles, okay, if I take four circles and roll them together, what will I get? I will get one ball. Okay, that means I have four times the area of a circle. So the total surface area will be what? What is the area of one circle? Pi r square. So four circles will be 4 pi r square. That is the total surface area. Okay. Now, total surface of a hemisphere will be what? It will be one less than that. So for a hemisphere, okay, चलो hemisphere का बाद में करते हैं. Let us do for the curved surface area. Is there any curved surface area? So the total surface area is equal to the curved surface area because वो सारे joint है. All the parts are joined. हम किसी एक face को निकाल नहीं सकते, right? So total surface और curved surface sphere में same ही रहेगा. But in a hemisphere, curved surface होगा 2 pi r square और total surface होगा 3 pi r square. ठीक है? That is like the half of sphere. अब वॉल्यूम, इफ यू टेक अ स्फीयर, उसको अगर आप उसमें डालोगे इन अ सिलेंडर, सो यू विल गेट 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम. और हेमेस्फियर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब. सो दैट्स इट, इतना ही आपको याद करना है. ऑल दिस फॉर्मूलाज ओनली यू हैव टू रिमेंबर, नथिंग मोर यू नीड टू रिमेंबर. बस अगर इतना याद है, everything fine. Okay, if you remember this much, everything will be all fine. So let us start with doing some questions. If you want to take a video, revise all the questions, so you can do that. Now let us start doing some important questions. Question number 1: the length, breadth and height of a room are 5, 4, 3. So length is given as 5, 4, 3 meter respectively. Okay, find the cost of whitewashing the walls and the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. Now हमको क्या करना है? वाइट वॉश करना है, एरिया वॉल्स को भी करना है, प्लस रूम एंड सीलिंग को भी करना है. So what will we find here? We will find here the total surface area. Correct? Total surface area we will find out. What is total surface area? It is nothing but 2 times of LH plus BH plus HL, isn't it? So calculate it. 2 into LH, 5 into 3, correct? Plus BH, 4 into 3, plus HL, again 5 into 3. Sorry, wait. LH, okay, BL, okay, BL. So 4 into 5, correct? 4 into 5. So what will we get? 2 into 5 threes are 15, correct? 15 plus 4 threes are 12 plus 4 fives are 20. So 47 into 2. That will give you, wait 1 second. Okay, student, sorry. So basically you have to find the total area to be whitewashed. Walls का area और ceiling और room का area find out करना, तो that will be 2 times of LH
प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच और बस एल बी होगा, 2 10, पूरा रूम को नहीं कर रहे हम, दैट्स वाई. सो फाइंड आउट दिस वैल्यू, इट विल बी 2 into 5 into 3 plus 2 into 4 into 3 plus 5 into 4. Calculate this. 5 3 is a 15, 15 to 30. 30 plus 24 plus 20. So it will give you 74 meter square. ठीक है. अब what is the cost of white washing? 7.50 per meter square. Correct. So ये हमारा 74 meter square है. So what will be the per will be nothing but 7.50 into 74, that gives me approximately rupees 555. Okay, so that is your answer. Let's check it. Yes, this is your correct answer. Let's check the next question. A solid cube of side 12 centimeters cut into 8 cubes of equal volume. एक 12 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसका साइड्स उसको 8 क्यूब्स में डिवाइड किया और हर क्यूब की इक्वल वॉल्यूम है. What will be the side of the new cube and find the ratio between their surface area. So let us try to do this. First, volume find out करते हैं cube का. What is the volume of the cube? Volume of the cube is nothing but a side cube. So 12 cube karo. 12 cube will give me how much? 1728. Correct? Centimeter cube. All right. Now सरफेस एरिया कितना हुआ? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 12. 12 है ना सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया 6a². सो 6 into 12 square, दैट गिव्स मी. चलो लेट इज नॉट कैलकुलेट दैट, लेट्स नॉट कैलकुलेट फॉर नाउ. हम इसको बाद में कैंसिलेशन कर लेंगे. नाउ 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. करेक्ट, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. लेट अस से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज x. ठीक है, volume of a new cube is x. So volume of the small cube will be what? Volume of smaller cube will be x cube. Correct, x cube. Surface area क्या था? 6. सॉरी, सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया विल बी, एक साइड x है तो 6x³ सॉरी 6x² होगा. करेक्ट. नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब बोला है, वॉल्यूम दोनों का ही सेम है. सो दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? It will be equals to 1728 divided by 8 centimeter cube, because if we do 2 times 2 cube, that time we'll get it, then 216 centimeter cube we will get. Or we can say that x cube is equals to 216 centimeter cube. So x will be what? X will be the square root of 216, that is equals to 6 centimeter. So value of x is 6 centimeter. अब रेशियो क्या होगा? रेशियो विल बी surface area of first one, surface area of the smaller cubes. Correct. So surface area of the cubes will be how much? पहले वाले का है 6a². Correct. That is 6 in, oh sorry, let's say 6a². दूसरे का है 6x². 6 get cancelled out. a² by b². So you will get 12 square by 6 square, that is nothing but 4 by 1. So your ratio will be 4:1. So ratio 4:1 है और the side of the new cube is 6 centimeter. ठीक है, here is your answers. Next question. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter, base diameter 140 centimeter, and from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required to for the same? How much are required? So let us calculate. Height दी गई है, radius दिया गया है. Now height is how much? Height is given as 1 meter. Correct. रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 70 सेंटीमीटर. करेक्ट. नाउ 70 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यू विल गेट इट एज 0.7 मीटर. करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट हाइट जो है मीटर में. नाउ एरिया ऑफ शीट, कितनी शीट रिक्वायर है? दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया. करेक्ट. सो व्हाट इज द टीएसए ऑफ अ सिलेंडर? टीएसए इज 2 pi r plus h. Correct. Do we have सारी values? Yeah, we have put it.
2 into 22 by 7 into 0.7 multiplied by 0.7 plus 1. Calculated, you will get the answer as 1002. You'll get the answer as 7.48. Huh. 7.48 meter square. That is the square meter of sheet required. Okay. आंसर चेक करते हैं. Okay. Oh, sorry, wrong question. Yeah, answer is 7.8. Yeah. Let's go towards the next question. Next question is, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter is 24 meter. Assume pi to be 22 by 7. Very easy. क्या डायरेक्ट उन्होंने सब किया, हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द रेडियस? Radius is given 24 by 2, that will give me 12 meter. Then slant height L is given to me as 12 meter. Sorry, 21. Sorry, 21 meter. Then what is total surface area? Total surface area is nothing but pi r L plus r. Correct? So put the values. 22 by 7 into 12 multiplied by 21 plus 12. Correct? When you calculate it, what will you get? You will get it as 33 into 12. You will get it as 0.1244.5. Yeah, 1244.5 meter square will be our answer. Look over here. 0.57 or point 0.5. Yes, so that's correct answer. Okay. Now let's go towards the last question. The diameter of the moon is approximately one fourth of the diameter of the earth. What fraction of volume of earth is the volume of moon? Now, students, I want you guys to do this question as a homework. This is a homework question. Try to solve it in your home and answer me in the comment section. What will, if you can write the explanation, fine. If you cannot, just you can write the fraction of the volume of Earth and Moon. Okay. So with this, students, we have completed with the today's lecture. Within 30 minutes, we completed the full chapter along with questions of surface area and volume. I'll be seeing you very soon in upcoming videos. Make sure to like this one, share it with friends, and subscribe to our channel ko. Hit the bell icon for regular notifications. I'll be seeing you in the next video. Till then, take care and goodbye.